Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope you're all doing good. But as you know, due to this pandemic disease, COVID-19, you are unable to come to school and attend your regular classes on regular basis. So ICMS Versec branch have decided to send you recorded lectures, so you can note them, or so you can study from them anytime, right? I'm your physics teacher, and this is your physics book. This physics book is both for class 8 and 9. Okay, see, there are uh, 9 chapters, right? Okay, now what we will do, we will divide the book into 2 sections for class 8 and 9, and further we divide the book into 2 sections for first term and final term of class 8, and for the first term and final term of class 9th, right? We will go with the sequence. Take care. First we will do the very first chapter, which is physical quantities and measurements, the second chapter kinematics, the third chapter dynamics. I'll try to cover the 3 chapters in the first term, inshallah, right? So in the first chapter, the name of the chapter is Physical Quantities and Measurements, and the sub-part is Introduction to Physics, Physical Quantities, International System of Units, which we also call SI units, standard forms, scientific notations, prefixes, measurement instrument, and significant figures. Okay, now what we will do, we will try to cover each and every topic, but some are related to your lab work. So we will do, inshallah, jab school khulega, to we will continue that. Fine. So we'll go with the explanation and some numerical problems and all, right? Now let's move to your very first chapter, physical quantities and measurement. Before starting the to explaining the topic, the chapter name, you should know that what is physics, right? What is the concept behind the physics, why we study physics and all. Okay, after studying this unit, you should be able to describe the circular rule of curricular role of science, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एग्जाम्पल के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज़ द बेस क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम, राइट? SI units along with the assembles and physical quantities, एंड प्रीफिक्सेस को हम कैसे उनके सैम्बल्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्ट करते हैं इनको, एंड ऑल. ओके, so we will learn all these in this chapter. After reading or understanding the chapter, you will know the answer and you will answer all these questions. Fine. Okay, what I have decided, I will explain the whole topics from these notes, but I think to understand the physics, the reading of first page is very important, right? So it's page number 2. Physical quantities and measurement. All the quantities we deal in physics require measurements. This chapter is built on Unit 8 measurement of physical quantities of general science for grade 8. Measurement is not only a key concern in physics. In our daily life, we are always making measurements. For example, when we go to the tailor shop, before sewing our clothes, he takes the required measurement. फिजिकल क्वांटिटीज़. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो चीज़, अब आपसे फिजिकली जिस चीज़ की प्रेजेंस हो, ठीक है, उनकी क्वांटिटी चेक करना, उनकी मेजरमेंट्स चेक करना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स. डेली लाइफ से आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिए यहाँ पर कि आप जब टेलर के पास जाते हैं तो बिफोर स्विंग, यानी वो कपड़े सीने से पहले वो मेजरमेंट्स लेता है, ठीक है, द साइज ऑफ योर शर्ट, लेंथ, विड्थ, each and everything, right? So this is a measurement. Introduction to physics. Man has always been curious to know the how and why behind the working and function of things. He asked the fundamental questions like, how did the universe begin? How does it change? What rules govern its behavior? Why do things fall to the ground? Why does the moon seem to change shape during the month? What grows inside the sun to make it hot?
Physics is all about trying to answer questions like these. All of these phenomena in the universe involve the study of matter and energy. Okay, let me show you this and it will be more convenient and easy for you. First, in the very first paragraph, that is Introduction to Physics, in which he explains, the author explains that man is always curious. मतलब हमेशा उसके पास एक तजस्सुस रहती है. How and why? कैसे? क्यों? कब? See, in daily life, if you let's take the example of COVID-19. ठीक है? Whenever you think about COVID-19, there will be some question in your mind that how it comes, how it spreads. ठीक है? कैसे बना? What is reason? What is the main reason behind this disease and all? So this is a human nature. We think a lot. We want to know a lot. ठीक है? This is a human nature. This is nothing new. But in physics, you will the how and why concern about the universe, about the matter, about energy, about moon, about its rules. ठीक है? कैसे दुनिया बनी, इसमें चेंजेस कैसे आती हैं, कौन इसको चलाता है, मून क्या है, उसकी शेप में चेंजेस क्यों आती है. ठीक है? तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वी स्टडी द फिजिक्स, राइट. अब ऑल दीज इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ये सब क्यों चेंज होती है, फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे हमने पढ़ा क्या होता है. तो इन सब की जो मेन एक रीज़न है वो हमारे पास है मैटर और एनर्जी, जो इन सब में इन्वॉल्व है, जो स्टडी को इन्वॉल्व करती है, और यही मैटर एनर्जी हमारे पास फिजिक्स बनाती है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज अ मैटर. इट्स हैविंग अ मास ऑक्युपाइड स्पेस. ठीक है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो, वज़न हो, जगह पकड़ती हो, दैट इज़ मैटर. लेट्स सपोज दिस बुक, दिस इज़ अ मैटर. ठीक है? इट हैज़ अ मास, इसका एक अपना वज़न है. यहाँ पर मैं रखूँ तो ये जगह पकड़ती है यहाँ पर. ठीक है? नाउ कम टू द फिजिक्स. Physics is the branch of science that involves the study of a physical universe, energy, matter, and how they are related. ठीक है? Okay, let me tell you one thing. There's some problem with my phone. It's showing the blur image. It's showing the blur image of the book. So you can use your own book, right? You can use your own book, read from your own book. Okay, this is must that you should have your book, pencil and rough copy, so you can note or you can copy these notes as well. ठीक है? Now what is a physics? Science that involves study of physical universe, energy, matter and how they are related. फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे साइंस जो है फिज़िकल यूनिवर्स में इन्वॉल्व है, फिज़िकल जो दुनिया में जो हम चीज़ें देखते हैं इसमें कैसे इन्वॉल्व है, एनर्जी है, मैटर है, और कैसे ये रिलेटेबल है आपस में, कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये है. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन, कम टू द दिस एनर्जी. इट्स अ क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म टू वन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क ऑन. ठीक है? और टू हीट द ऑब्जेक्ट, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. अच्छा, ये जो है ना एनर्जी, ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है. क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी वो चीज़ जो हम गिन पाते हैं, जो हम मेजर कर पाते हैं. ठीक है? एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है, उसको हीट देती है ताकि वो काम कर सके. ठीक है? एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है. अंडरस्टूड? लेट्स सपोज हम कुछ खाते हैं. ठीक है? उसमें केमिकल्स होते हैं ना, मतलब आप कोई केमिकल्स में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं. दीज ऑल आर द केमिकल्स. व्हाई वी ईट फूड? टू वर्क, राइट? सो वो फूड जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है. जब वो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ऑफ द एनर्जी, टाइप ऑफ द एनर्जी, राइट? जब हम उसको वर्किंग में लेकर आते हैं, जब वो अपना एक सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसको वर्किंग में लेकर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए, हमने ईट किया, प्रोसेस हुआ, एक प्रोसेसिंग, हीट प्रोसेसिंग हुई. ठीक है? उससे हमने वर्किंग किया, वार्म अप किया. तो ये एक फुल सिस्टम है हमारे पास एनर्जी का. ठीक है? इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो रीड इन द बुक, बट let me explain from here. Matter that occupies space, having mass and size like proton, electron, neutron,
solid, liquid and gases. Matter क्या है? As I told you, something having a mass or occupied space is a matter. ठीक है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ठीक है, आप सॉलिड में भी ले सकते हैं, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लेट्स सपोज दिस बुक, दिस इज अ मैटर एंड इट्स सॉलिड फॉर्म. लिक्विड, वाटर. वाटर की एक मास है, वाटर जगह लेती है पानी. ठीक है, तो वो आपके पास लिक्विड के एग्जाम्पल्स में आ जाती है. गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल. ठीक है, ये हमारे पास स्पेस लेती है, जगह लेती है. बच्चे, दिस इज़ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू, सो आई ट्राई कि मैं स्टार्ट में थोड़ा कम रखूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए. ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज क्लास. ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक I'll try to explain more and more. Have a good day and read your page number 2. ठीक है, यहाँ तक आपका कवर हो गया, बट ट्राई टू रीड दीज पार्ट्स ऑल्सो यहाँ तक to the page number 3. So next lecture में when I will explain you, when I'll be explaining you, so it will be more easy to understand. Okay, take care. Allah Hafiz.